Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to start with revisions, that is forfeiture of shares, and we are going to solve some illustrations regarding forfeiture, and last concept is reissue. Friends, before starting any session, let's have revision. Personal account, traditional rules: debit the debtor, credit the creditor, debtor becomes giver, creditor becomes receiver, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. In case of modern approach, asset is a debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and capital credit balance. So friends, first, whenever you are applying for rules for company accounts, I always suggest you to use modern approach for company accounts, because liability side capital will get increased and asset side bank balance will get increased. Sorry for disturbance. Okay, now whenever share capital is there, we have divided it in 4 parts: application, allotment, first call, second call. Application is bank account debit to equity share application. Then equity share application account debit to equity share capital. Application account will get cancelled. Second entry will be equity share allotment account debit to equity share capital due first, and then bank account debit to equity share allotment. Allotment is a temporary account and bank balance will increase and equity share allotment cancel ho jayega, and equity share capital will be shown under the head equity share capital. Suppose if security premium is there, equity share allotment account debit to equity share capital to security premium, and security premium will be shown under the head reserves and surplus. Equity share first call account debit to equity share capital, and then bank account debit to first call. So first due then received. Only in application first received and then due, and remaining इसमें आपका पहले due होगा and then received. Friends, then I told you entries regarding forfeiture. Forfeiture means cancellation of share. So cancellation of share means ownership is getting cancelled. So how to remember? Share capital has to be debited. Normally share capital has credit balance, but you have to give debit while cancelling it. So share capital account debit. 2 calls in arrears. Calls in arrears has a debit balance, and while cancelling it, you have to give credit. So 2 calls in arrears and 2 shares forfeited. So shares forfeited has a credit balance, and shares forfeited balance will be shown under the head share capital. Shares forfeited, and your capital and calls in arrears accounts are getting cancelled. If security premium is not received, in that case, you are going to cancel security premium. Now, question of the day. Now, I'm going to ask you question of the day. So, beta, please tell me the shares forfeiture entry for 3241 1321. Chaliye. So, this is a question of the day. Yes, tell me fast, what is the entry for this forfeiture? So beta, forfeiture entry, those who have revised it yesterday, yes, tell me fast. Onkar Jadhav, very good beta. Sir, I found examples of partnership very difficult during the lecture. I revised the sections only one time, and now they are very easy for me. Even I solved those examples only in 20 minutes. I'm very glad to got a teacher like you. Thank you, beta. Thank you. Zeba is saying, sir, because of you, I prepared all illustrations of forfeiture by own. Very good, beta. Zeba, तू तो हुशारी है. संकलदीप पासवान, क्या छा गए बेटा, तुम तो बहुत होशियार है यार. तू कहां से हो संकलदीप? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 9, सिक्योरिटी प्रीमियम. यस बेटा, 9 कैसे आया? नो बेटा, ओंकार गलत गलत गलत. 3 + 2 + 4. We are not going to consider this 2. So security premium 1 we are going to cancel. Then 2 calls in arrears. एक ही गलती हो गई ओंकार, लास्ट का 1 क्यों पकड़ा आपने? 2 calls in arrears and 2 shares forfeited is beta. Calls in arrears is this 5 and shares forfeited is 5.
9155, 9155, 9155. Baraktullah correct, 9155. Gunshita correct. वाह, आज तो सभी बच्चे करेक्ट ही बोल रहे. वेरी गुड. ओ ओ ओ, कीर्ति ने गलत जवाब. कीर्ति गलत जवाब. कीर्ति जी थोड़ा सा गलत हुआ. 9155. 9155 एंड बैंक. ज्योति, ज्योति एंट्री क्या? टू बैंक. वी डू नॉट हैव टू रिफंड मनी ना बेटा. ज्योति क्या कर रही हो बेटा? चलो ज्योति, चेंज योर आंसर बेटा. वाह संयमा, आज तो कुछ खा के आई है बेटा तू. 9155. पूजा कुमारी 9155. प्रतिज्ञा 9154. ओ, 4 बोल दिया प्रतिज्ञा ने. प्रतिज्ञा ने टैली भी नहीं किया. प्रतिज्ञा, यू हैव टू टैली ना बेटा. 9 + 1 10, 5 + 4 9. हाउ इट इज पॉसिबल? बिबू ने सिर्फ लिख दिया forfeited shares 5. बेटा बिबू, आई वांट फुल एंट्री. रोहितनी जाना, शी इज टेलिंग सर shares forfeited 5. चलो ठीक है, चलो ओके. ईशा पंडित 9155. प्रतीक जी 9155. वेरी गुड, वेरी गुड. एवरीवन आंसर्ड इट करेक्टली. चलो आज तो सभी स्टूडेंट्स ने एकदम अच्छे से किया हुआ है. ओके, very happy with your performance beta. Today almost all students answered it correctly. चलिए. So today we are going to start with illustration number 5. Then we are going to see one illustration which is really very difficult, that is illustration number 7. Many students are waiting for illustration number 7. I know that कि illustration 7 में आपको थोड़ा सा difficulty गया है, but yes, I will do this very easy for you. Illustration number 7. So संकेत सर के कुछ चुटकुले आपको देखने हैं जो आपको बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. Next, the Delhi Art were issued 50,000 shares for 100 each and 1 lakh preference shares of 100 each. So beta first we are going to check whether this is A category question or C category question. यदि C category का question होगा तो I'm not going to take it. So I will show you directly the answer. So you only tell me whether it is A category question or C category question. Yes, you only tell me. Illustration number 5. चलिए बताइए. Illustration number 5. Illustration 5 is a Z category question. Oh. And illustration 6 is C category question. Okay. So 5 I'm not going to take. Yes, it's very simple that you just have to write it in the cash book. So see beta, entries you have to write. Yes, due entries you will write it in the journal proper. So what is the basic difference? Journal proper you are going to write only due entries, and in cash book you are going to write whatever received entries. तो received किस में करना है? Received you will write it in the cash book. So received entries and due entries you will write it in the journal proper. So you can see equity share application, equity share allotment to equity share capital, preference share application to preference share allotment to एक ही entry में किया है, application and allotment in one entry. So this is how you are going to present your answer. So बेटा yes, answer बहुत easy है. C category question. ओके, Z कैटेगरी दे दिया मैंने तो Z कैटेगरी क्वेश्चन. ठीक है, चलो. Now next question is illustration number 6. When security premium is there, so whenever security premium is there, so you have to draw that diagram. चलो 6 में it's very simple question. Illustration number 6.
So what is the premium? Yes, beta. Security premium. Where to show security premium? Tell me fast. Where to show security premium? चलो जल्दी से मुझे बताइए. Already I told you where to show security premium. Where to show security premium? जल्दी से मुझे बताइए. Yes, where to show security premium? Tell me fast. Under the head, reserves and surplus. Okay, very good. Liability side nahi beta. Sagar, not only liability side, under the head, reserves and surplus, we are showing security premium. Correct? Now, what to do with this security premium? Sir, liability side पे equity share capital तो आप बता ही देते हो. So what to do with this security premium? तो security premium को normally credit balance, but when to give debit? For example, suppose if I'm earning profits, I'm going to distribute dividend out of this. So I'm going to distribute dividend out of this, sir. But whenever I'm earning सिक्योरिटी प्रीमियम, आई एम गेटिंग सिक्योरिटी प्रीमियम. सो प्रॉफिट में से मैं क्या करता हूँ? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रॉफिट में से आई पे डिविडेंड. सो वेन एवर आई एम अर्निंग प्रॉफिट आई विल पे डिविडेंड. बट सर सिक्योरिटी प्रीमियम इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड? नो सर, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व. देखो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को कम नहीं कर सकते हो. प्रॉफिट डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब यू रिड्यूस्ड योर प्रॉफिट. डिविडेंड मीन्स यू रिड्यूस्ड योर प्रॉफिट ऑन द लाइबिलिटी साइड. ऑन द लाइबिलिटी साइड यू रिड्यूस्ड योर P&L अकाउंट, and here you will reduce your bank balance. So bank balance is getting reduced and P&L is getting reduced. So both side पे आपका ये होने वाला है, bank balance and P&L accounts. Okay. मानवी खन्ना, क्या मेरा आवाज कम आ रहा है? यस, चलो 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 फास्ट. सो P&L अकाउंट में बैंक बैलेंस और P&L दोनों साइड पे आपका कम होने वाला है इन केस ऑफ डिविडेंड. सो डिविडेंड के केस में यूर एंट्री विल बी बैंक बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस एंड P&L इज गेटिंग रिड्यूस. सर व्हाट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम व्हेन इट इज गेटिंग रिड्यूस? एंड इट हैज 5 uses, and that 5 uses we have to understand in section number 52. Understand it. Section number 52 is what about when to reduce security premium. So this is security premium utilization. Use means what? Security premium को debit देना. Use means what is the meaning of use? Security premium is debited. So security premium is debited. Write down there. The security premium debit कब होता है? Security premium debit कब होता है? ओके चलो जल्दी से लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होता है? चलो बेटा जल्दी से लिखना है. सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड. हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होता है? व्हेन इफ यू आर पेइंग बोनस शेयर्स. तो बोनस शेयर्स जब आप पे करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट देते हो. सर बोनस शेयर्स मींस व्हाट? सर राइट डाउन एंट्री ओवर बोनस शेयर्स. चलो आप लोग डिसाइड करके मुझे बताइए व्हाट इज द एंट्री फॉर. थिंक सर के पूरे लॉजिक एंड टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर बोनस शेयर्स. जस्ट वांट टू चेक. यस, बोनस शेयर से क्या बढ़ेगा ये डिसाइड कीजिए, और ये क्या कम होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ. सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट होगा, पर किसको क्रेडिट होगा? सो यू हैव टू टेल मी किसको क्रेडिट होगा. यस yes, so entry is very good. Who answered very fast? Not to shareholder बेटा. सबसे पहले सैनी जी फ्रॉम CRO ही आंसर. नो, उसके भी पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है. सॉरी. ईशान बिष्ट, मानवी खन्ना. अरे वाह मानवी, होशियार हो गई तो एकदम. यस, मानवी खन्ना ने आंसर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो बेटा कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस इंक्रीज. कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज. सो यू कैन राइट ओवर देयर सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नाउ second one is to write off preliminary expenses. Now what is preliminary expenses? Can you tell me what are preliminary expenses? Beta preliminary, yes, anyone who knows the answer what is preliminary expenses? चलो जल्दी से बताओ what is preliminary expenses.
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए, चलो 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 फास्ट बोलिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? यस, एनीवन हैज आइडिया? ओके, so preliminary expenses is that which you incur. Yes, I'm waiting for your answer. Which you incur at the time of yes, what watching your answer बेटा, चलो 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 फास्ट। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? चलो थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यस वेरी गुड, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड। सो हु आंसर्ड वेरी फास्ट? मानवी करना, अरे मानवी आज तो फुल छा गई तू। यस, प्रोमोटर्स एक्सपेंसेस। So promoters means preliminary expenses, formation expenses. So company formation expenses, company इतना easy नहीं है to form, so you have to incur some expenses, and that is called as preliminary expenses. So preliminary expenses is nothing but beta formation expenses. It is called as formation expenses. Okay. So preliminary expenses की entry क्या होगी? Preliminary expenses account debit. Preliminary expenses account debit to bank. ओके, बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यू कैन ट्रांसफर। नॉर्मली हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं? पी एंड एल में। तो पी एंड एल इज अ करेक्ट वन। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। वेट 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 वेट, बट इफ यू आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू कैनॉट अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम। और बेटा इन इंडिया एवरी कंपनी इज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो हमारे लिए सेक्शन 52 ये इतना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन रियल लाइफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बट यू विल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप किसको डेबिट देंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के टाइम पे। जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, पर बेटा ऐसी कोई कंपनी होती है क्या? तो कंपनी एक्ट ने क्या करके रखा है? कंपनी एक्ट ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, बट बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टेलिंग यू डोंट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द टाइम ऑफ transferring preliminary expenses. So company law, there is a fight between company law and accounting standard, and who is prevailing, who is winner in that case? Prevail means winner, accounting standard. Accounting standard talks about कि भाई accounting standard issued by ICI, and company act is issued by government, बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने ये किया हुआ है, एमसीए ने ये दिया हुआ है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेल्स इट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल। सो बेटा इन सिक्योरिटी प्रीमियम दो इट इज अ यूजफुल, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज नॉट अलाउड, एंड therefore बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग इन रियल लाइफ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू पी एंड एल, एंड बेटा इन बुकिश लैंग्वेज वी आर ट्रांसफरिंग इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो बेटा बुक में सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ करेक्ट एज पर एमसीए, कंपनी अफेयर्स। ओके, तो बट इतना याद रखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू हैव टू ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको ये कहां पे लेके जाना है? भले सेक्शन 52 में दिया हुआ है, सेक्शन 52 बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट दो, पर हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये कंपनी अफेयर्स एमसीए ने बोला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ ने बोला हुआ है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, एक ही घर में दो व्यूज है, एक ही घर में दो व्यूज है। एक बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं कि भाई आपको कॉमर्स में सीए करना है, और मम्मी बोल रहे हैं नहीं नहीं बेटा तुझे साइंस में जाना है। एक ही घर में व्यू है, हम किसका सुनेंगे? बेटा हमें पापा का ही सुनना पड़ेगा। जैसे मैं दक्ष को हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज किसका सुनना है? पापा का सुनना है, पापा इज ऑलवेज राइट। तो बेटा यहाँ पे दो लोग हैं, कंपनी लॉ अलग बोल रहा है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बोल रहा है, तो आपको किसका सुनना है? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सुनना है, इतना याद रखो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट कि सिक्योरिटी प्रीमियम हैज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड कंपनी लॉ is telling you security premium is used for preliminary expenses. Okay, चलिए okay, you are not audible? मेरा ऑडिबल है ना आवाज? So there is a fight इसके बीच में, एमसीए वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वी हैव टू लिसन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अल्टीमेटली बेटा आईसीआई ने इशू किए हैं। ओके, to write off the expenses or commission paid or discount allowed. Okay, so to write off preliminary expenses के साथ commission discount allowed on the security of debentures, securities or debentures of the company. For example, CCC, suppose 100 rupees का शेयर,
not allowed to take it at 90 rupees. Okay, you collected beta bank account debit, discount account debit to debentures. Okay, so share to allowed nahi hai. Debentures is always shown at face value. Okay, and we collected bank mein 90 rupees. So beta we have given discount. Discount is a loss for me. Discount is a loss for me. Now this loss is normally transferred to profit and loss account. But beta security premium is talking about. ये security premium बोल रहा है कि मुझे reduce करो. You can reduce my balance. Okay, so this is given in the section 52. So whenever you are issuing security at discount, security means what? Preference shares or equity shares. Security is a common word for preference shares or equity shares. Okay, so preference shares or equity shares. Security means preference shares or equity shares or debentures of the company. So whenever, so beta equity shares are not allowed to issue at discount. So equity shares to chala gaya. तो बचा कौन? Preference shares. So preference shares if you issued at discount, in that case beta that discount is a loss, and that loss is normally transferred to profit and loss account. But here you can transfer it to profit and loss account के बदले में security premium. किसको transfer करना है आपको? Security premium. So you can reduce security premium account. Next one. To provide premium on redemption of preference shares or debentures. But a premium on redemption. Redemption means when you are paying back. Okay, when you are paying back, in that case, better in paying back. For example, I collected 100 rupees from you. I collected 100 rupees from you, but while paying you repayment after 5 years, I'm paying you 110 back. कितना पे कर रहा हूं मैं? 110 में वापस दे रहा हूं. So that extra 10 rupees I will transfer it to profit and loss account as per accounting standard. And as per company law, they are talking about that 10 rupee you can reduce security premium. पर हम किसके सुनने वाले हैं? Accounting standard. तो as per accounting standard, debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो किसको डेबिट देना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देना है. व्हेन यू आर पेइंग 110 टू यूर investor. So whenever you are paying 110 to your investor, that 110 is your loss. The 10 rupees is your loss because you collected 100 and you are paying 110. So extra 10 rupees you are paying back. It is called as, क्या बोलते हैं इसको? 10 rupees extra payment को बोलते हैं premium on redemption. क्या बोलते हैं इसको? Premium on redemption. Premium on redemption. And where it is debited, not in the profit and loss account, sorry, not in the security premium, but in the profit and loss account as per accounting standard. But as per section 52 of Ministry of Company Affairs, they are talking about you can give debit to security premium account. तो आप extra 10 रुपए के लिए security premium को debit दे सकते हो. And next one, for purchase of own shares. Own shares means buyback. Buyback. For example, suppose buyback is what? Yes, beta, B and D. So buyback में भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, जैसा उन्होंने दिया हुआ है. सो बायबैक के केस में यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट. बायबैक इज ऑलवेज फॉर इक्विटी शेयर्स. सी रिडम्पशन ये वर्ड यूज होता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. किसके लिए यूज होता है? रिडम्पशन मीन्स टू गिविंग बैक मनी ऑफ preference shareholders and debenture holders. Okay, so buyback is for equity shareholders. So buyback word is for equity shareholders and redemption is word for preference shareholders and डिबेंचर होल्डर्स. ध्यान में आ रहा है? सो डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस होल्डर्स होंगे तो रिडम्पशन वर्ड यूज होता है. एंड बायबैक ये वर्ड यूज होता है फॉर इक्विटी शेयर्स. बायबैक मींस इक्विटी शेयर्स. ओन शेयर्स वापस परचेस करना इज कॉल्ड एज बायबैक. बायबैक में कौन सा वर्ड यूज करना है? बाय इक्विटी शेयर्स के लिए. और बायबैक में आप इफ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट 100 के बदले में 110, देन 10 रुपीज कैन बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. किसको डेबिट दे सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट दे सकते हो. इतना सिंपल है. सो यू आर गेटिंग द डिफरेंस. ये section 52, yes, this is 4 marks question in exam. What are the uses of security premium? So there are 5 uses. Number 1, so 5 uses में से number 1 is first one is for bonus shares. For bonus shares. Second one is for preliminary expenses. Third one is for discount or commission on issue of shares. Fourth one on redemption purpose if you are paying extra amount, and buyback you are paying extra amount. That is the fifth one. So beta कौन सा as per accounting standard B and D are not allowed. किसको डेबिट देना है? नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम. हम लोग P&L को डेबिट देंगे. हम लोग किसको डेबिट देंगे? P&L को. सो यस बेटा, शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू होते. सो इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट. प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट. तो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते, इक्विटी शेयर्स नहीं होते.
और डिबेंचर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। आवाज बहुत स्लो है। आवाज मैं चेक करता हूं। आवाज। ओके, चलो जल्दी से वॉट एवर यू अंडरस्टूड यू हैव टू टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। यू हैव टू टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन। चलो फटाफट बताइए वॉट एवर यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए। So here security premium is debited. Very good. So all students have answered it correctly. Miss Sayyama ji, security premium reserve is a specific reserve. Security premium reserve नहीं होता है. Sayyama ji, it's only security premium. It's not reserve. Don't use reserve word in front of security premium. Already security premium is a excess amount. Premium means excess. Again, you don't have to use reserve word. Okay.
and is a specific reason and dividends can't be paid out of it. Very good. So preliminary expenses transfer to P&L account. Security premium means both preference shares and equity shares. Security means both preference shares and equity shares. Very good. Security means if company is paying 10 rupees extra on redemption of debenture, then it is debited to profit and loss account. Okay, beta. It's very, very simple, beta. It's very, very simple. Okay, chaliye. So now we are going to solve one important illustration, that is illustration number 6, 7. So security premium, you have to collect it at the time of allotment in this case. 6 May. So allotment account debit to equity share capital to security premium. So security premium is credited at the time of allotment. आप कौन से टाइम पे allotment करोगे? Nominal value means face value. बेटा nominal value means face value. ठीक है? So face value, nominal value, par are same answers, beta. Okay, so security premium is credited at the time of allotment. आप कब credit करोगे? At the time of allotment. चलिए. चलो, now I'm going to solve one important illustration before break. So break के पहले एक important question solve करते हैं. 6 number you can do by your own. It's very simple. प्लीज बेटा नाउ फोकस फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स. ओके, अभी आपको पूरा फोकस करना है नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए. And you have to understand this pro forma because this question is A plus category question. So please try to understand it because this is over subscription question. This is over subscription plus pro rata. Pro rata plus over subscription. Okay, over subscription plus pro rata. नहीं, JHP Limited is company with authorized capital of 10 lakhs. With authorized capital of 10 lakhs. Which is divided in 10 each equity shares. So there are total 1 lakh shares, sorry, 10 lakhs, of which 10 lakhs बेटा ये रुपीज वर्ड निकाल दो. It's a printing mistake. It's a printing mistake. 10 lakh shares, of which 6 lakhs issued and fully paid on 30th June. Okay, so rupees word nikal do. The company proposed to make a further 1 lakh shares of a price of 14 each. Kitna price hai? 14 each. Okay, so security premium is there 4 rupees. So rupees 4 security premium. Security premium. Beta, your net issue is there. Security premium है. Yes. See, security premium is rupees 4. 2 per payable on application. So beta, what is your diagram? 2 allotment 1 plus 4. 1 for face value, security premium 4. And then final call. So 3 plus 7. 7 is a final call. So final call is rupees 7. Okay, so draw the diagram. See, 2, 1, 3, 1, 4, sorry, 1, 4, and 7. And 7. Okay, so 2, 1, 7. Now please focus. You are getting application of 3,55,000 shares. कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला? 3,55,000 shares you got this application. Application of 3,55,000.
Okay. And there are three categories. You can write over there lot 1. Lot 1, you applied for 5,000 shares and you allotted 5,000 shares. You applied for 5,000 shares. So shareholders who applied for 5,000 shares, they are getting full 5,000 shares. Applicants 30,000 shares, they received 1 share for every 2 applied. So beta 30,000 shares ko you have given 15,000 shares and no money was returned to this. Now, what is the concept that I will tell you? It is being used to reduce the amount on allotment. Wait. This is a pending sentence. I will tell you exactly how to understand. Okay. So 30,000 shares, you allotted 15,000. And lot number 3, applicants of 3,20,000 shares, they are getting 1 share for every 4. So how many shares they are getting, beta? 80,000 shares are allotted. The money due was on final call and was received on the due date. ठीक है? Yes. You are required to record these transactions. ठीक है? So you are required to record these transactions. Yes. Now please tell me how many lots are there. कितने lot है? Tell me it in the comment section. Calculation for adjustment. Write with me, beta. Write with me. 3 lots. Calculation of for adjustments or refund. Write down. Calculation for adjustment or refund. चलो जल्दी से लिखिए. Calculation for adjustments or refund. Okay. Serial number. Particulars. Now please, every one of you will answer. Huh? Particulars. Lot 1, lot 2, lot 3, and total column is important for journal entries. For journal entries, we have to focus on total column. So write down. Table name is calculation for adjustment or refund. Serial number, particulars, lot 1, lot 2, lot 3, total. Now you only tell me, application received. I'm not going to answer it. You will answer it. Okay. Application received in shares. So beta, tell me application received in shares. Okay. How many applications received, beta?
Yes. No, 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 no. Application received lot wise I want. In shares, 5,000 lot 1 beta, 30,000 in lot 2, and last one is 3,20,000. So total is 3,55,000. Correct है? 3,50,000. ओके, अरे करेक्ट है क्या? Application received 5,000, 30,000, 3,20,000, 3,55,000. ठीक है? रोमन 2, allotment of shares. Allotment of shares. Now, how many shares you allotted? They applied, but how many shares you allotted? Write down. Yes, allotment of shares. Chalo. You can write only numbers. Allotment of shares. Chalo. Allotment of shares. So 5,000 को कितने allot किए? Very good. 5,000, 15,000, 80,000, 1 lakh. Allotment of shares 1 lakh. Then beta Roman 3. Allotment of shares over. Next. Application money received. Application money received. Yes, beta. Application money received. Tell me. So application money 2,174. Okay. Application money received. Received. Received means beta how to calculate? Yes, just tell me it in the particulars. Particulars में क्या multiplied by क्या करना है? So you have to tell me what is multiplied by what. So you'll get the application money received. Yes, tell me fast. Application money received. So application money received. You only tell me. Roman 1 into rupees 2. Roman 1 into rupees 2. Better application received is 5,000. So money received is Roman 1 into 2, that is 10,000, 60,000, 6,40,000 into 7,10,000. Roman 1, so Roman 1 into rupees 2. ठीक है? Very good. So Roman 1 into 2 rupees beta easy छे. चलो next one. Now you only tell me application money due. Application money due. Due means कितना लेना चाहिए था. So whatever shares you allotted, Roman 2 into rupees 2. Roman 2 into rupees 2. So beta here it is 10,000, 30,000, 1,60,000, 2 lakhs. 2 lakhs. Roman 5. Excess. 3 minus 4. Excess. 3 minus 4. 3 minus 4, 0. Excess money, 30,000.
4,80,000 and 5,10,000. करेक्ट है क्या यहां तक? यहां तक करेक्ट है क्या? Excess. चलो, so quickly revise. What is first one? After every 5 you have to revise पिछले 5. Okay. Number 1, application received in shares. Sir, allotment of shares. Then third one is application money received. Sir, application money due. And then excess. 5 easy rows, beta. 5 rows are very easy. 5 particulars. Yes, tell me till now. Recall. Application received in shares. Application के बाद allotment of shares. After that, application money received. Then application money due. Then excess money. So till now, any confusion? Okay, excess money. Now, beta, we have excess money. Are you going to refund it immediately, or what they have given, beta? What is given in the question? Now you have to understand this sentence. Now you have to understand this sentence. The excess being returned due on allotment. The money due on allotment, you will be retain it and excess will refund. And here, no money was returned. Surplus is reduced for due on allotment. So बेटा allotment में जो पैसा आने वाला है, allotment money, you have to adjust with allotment money. So what is the next column? What is the next row? Now you only tell me. What is the next row, beta? Yes. Yes, beta. So what is the next one? So what do you think? So first I have to see. Yes, think. Yes, first, excess money I have. Where to adjust it? They are telling you to adjust it in allotment. किसमें adjust करो? Allotment money due. Roman 2 into 5 rupees. Roman 2 into 5 rupees. Allotment money due. So whatever shares you allotted multiplied by 5 rupees. 25,000, 15,000 into 5, 75,000, 80,000 into 5, 4 lakhs, and total will be 1 lakh into 5, 5 lakhs. So allotment money due is 5 lakhs. And now Roman 7, adjustment of excess money in allotment. Adjustment of excess money in allotment, lower of 5 or 6. Lower of 5 or 6. Lower of 5 or 6. 0 rupees is adjusted. 30,000 is adjusted. And we will adjust only 4 lakhs. So we adjusted 4,30,000. And Roman 8, excess money refund. Excess refund is 5 minus 7. 5 minus 7. Beta, excess money we have 0 rupees in first case. Second case 0. In third case 4,80,000 minus 4,80,000 we are going to refund. Excess money refund. 5 minus 7. Yes. Any difficulty till now? Any difficulty till now? Yes. Adjust it in allotment and then refund. Think positively. You will get this question very easily. See, application received. Think for pro forma. Before exam, you have to revise this pro forma. Application received, allotment of shares, application money received, application money due, excess money, allotment money due, adjustment of excess money, and excess refund. Excess refund.
excess money refund. ताई ओके चलो ओके excess money refund. So till now any problem beta? Till now any problem? सही है माँ. रोमन 7. देख बेटा, ₹0 तेरे पास एक्सेस था और अलॉटमेंट में तुझे 25,000 था. तो बेटा तू कुछ एडजस्ट कर सकते. मेरे जेब में ₹0 है और मुझे चाहिए अलॉटमेंट पे 25,000, पर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा कुछ भी. मेरे जेब में एक्सेस 30,000 है. सी, मैं कंपनी हूं, मुझे आपने 30,000 एक्सेस दिया है और आपसे मुझे 75,000 वापस लेना है. आपसे मुझे 75, तो यू आर शेयर होल्डर. तूने मुझे ऑलरेडी 30,000 ज्यादा दिया है. अभी 75,000 जो रुपीज है वो मैं तेरे से मांगूंगा या पहले 30,000 को एडजस्ट करूंगा. तो तू बोलेगी सर 30,000 को एडजस्ट करो. दैट इज एडजस्टमेंट. इट्स वेरी लॉजिकल. तीसरा, तूने मुझे 4,80,000 एक्सेस दिया हुआ है और मुझे सिर्फ 4 लाख की जरूरत है. अलॉटमेंट में कितनी जरूरत है बेटा? 4 लाख की. तो तेरा ऑलरेडी मेरे पास कितना एक्सेस पड़ा हुआ है? 80,000. तो बाकी का मैं तुझे रिफंड कर दूंगा. इट्स वेरी लॉजिकल. है ना? सही है माँ जी. इट्स वेरी लॉजिकल. कुछ नहीं समझने वाली बात ही नहीं है इसमें. ओके. एंड so excess money not in first case, not in second case after adjustment, only in third case after adjustment. Okay, so after adjustment extra फिर भी 80,000 है. देखो, ये मेरे पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है. आपका एक्सेस मनी कितना है? पहले लॉट में कोई एक्सेस मनी नहीं है. दूसरे लॉट में एक्सेस मनी क्यों आया? भाई मैंने तुझे 15,000 शेयर्स दिए, तूने 30,000 की डिमांड की थी. यू आर शेयर होल्डर, यू डिमांडेड 30,000 शेयर्स, बट आई हैव गिवन यू ओनली 15,000. तो आपने 30,000 का पैसा मुझे भेजा था, तो आपका पैसा ऑलरेडी मेरे पास एक्सेस है. कितना एक्सेस है सर? एक्सेस है 30,000. अभी मैं वापस अलॉटमेंट पे आपको बोलूंगा, भाई कितने शेयर्स दिए मैंने तुझे? 15,000. उसके ऊपर ₹5 दे. तू बोलेगा सर वो एडजस्ट करो ना, पिछला पैसा था आपके पास. तो दैट इज एडजस्टमेंट. दैट इज एडजस्टमेंट. नाउ समझा बेटा? नाउ समझा? हिंदी में भी बता दिया मैंने आपको. अभी बता दिया ना बेटा? ओके. सो एक्सेस मनी रिफंडेड. बेटा स्टडी मटेरियल में डिफरेंट फॉर्मेट है. संकेत सर ने डिफरेंट फॉर्मेट दिया. फॉर्मेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, फाइनल आंसर इज इंपॉर्टेंट. एक्सेस मनी रिफंड. देन till now any problem now? Allotment money received. Allotment money received. Now see beta, allotment money received कितना आना चाहिए था? 25,000. ₹0 refunded and ₹0 adjusted. Okay, so allotment money due, Roman 6, can I write it as Roman 6 minus Roman 7? Roman 6 minus Roman 7. Why? Roman 6 minus Roman 7. Why? Because allotment money due 25,000, you adjusted 0, so 25,000. Allotment money due 75,000, you adjusted 30,000, so how much? 45,000. And in last case, allotment money due 4 lakhs and you adjusted 4 lakhs, so 0 you have to give me. So 25 plus 45, kitna हुआ रे? 70,000. And last entry, first call due and received. First call due and received, Roman 2 multiplied by ₹7. First call is ₹7. Roman 2 is shares which you allotted. 35,000
1,05,000. 8 7 5,60,000. 7 lakhs. Khatam. First call due and received. If you understand this table, now entries are not difficult at all. Entries are very, very easy now. Yes. Understood this question? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. Recall it. चलो all 10. Application received in exam. What you have to do? Application received. Allotment of shares. Application money received. Application money due. Excess money. Allotment money due. Adjustment of excess money in allotment. Excess refund. Allotment money received. First call received. खत्म. ઇઝી છે, ઇઝી છે, મારા માટે ઇઝી છે. ચલો ફાસ્ટ. અરે એની ડાઉટ? નો બેટા. પ્રિતેશ સુતારજી. Yes, good question, sir. 80,000 we received. Can we adjust it in first call? Beta, they have not given it separately. Yes, in question itself, you can see the excess being returned in the only in allotment you can use it. Baki excess is returned. Good question, sir. Can we adjust it in call? No, beta. Good question, Pritesh Sutar. Okay. Haji beta. Security premium is in allotment. We will pass this. See, allotment consists of security premium that we are going to see. So now entries. Number one entry 7,10,000 you received. So you can write over there 7,10,000 के बाजू में number one entry. So bank account debit. C entry number one. Bank account debit 7,10,000. 2. Equity share application 7,10,000. So equity share application 7,10,000. First entry. Second entry, due is only 2 lakhs. 2 lakhs is due. You refunded 80,000 and you adjusted 4,30,000. So 2 lakhs rupees you. In second entry, we will write 2 lakhs. We adjusted 430 and we refunded 80,000. So this is a breakup of 7,10,000. So equity share application account debit 7,10,000. You can give numberings to equity share capital. So only 2 lakhs. 1 lakh shares into rupees 2. How many shares? 1 lakh shares into rupees 2. To bank, you refunded 80,000 and you adjusted equity share allotment. In bracket, you can write adjusted 4,30,000. 4,30,000. So this table is very important. Okay. Number 3. Allotment money due 5 lakhs. So number 3, equity share allotment debit 5 lakhs. Wait. To equity share capital 1 lakh into 1. To security premium 1 lakh into 4. Third entry. Okay. Then allotment money received is number 4. Number 4, 70,000 के बाजू में लिखो allotment money received. So bank account debit to equity share allotment 70,000 and 4,30,000 already adjusted. So beta allotment account is getting cancelled. And last entry, equity share first call account debit
to equity share capital 7 lakh 7 lakh. So this is 5 and 6, 7 lakh, and bank account debit to first call 7 lakhs. So numberings are important. Numberings are important. See, this table will help you out to pass all journal entries. So at the time of revision, number one, how much amount is received? 7,10,000. So bank account debit to equity share application 7,10,000. Number two, how much you adjusted in allot application का capital में 2 lakhs. Excess money refunded 80,000 and allotment में कितना adjust किया? 4,30,000. So 2 2 lakhs 430 and 80. So equity share application account debit to equity share capital to bank to equity share allotment. Third entry, equity share allotment due. So equity share allotment account debit to equity share capital 1 rupee face value to security premium 4 lakhs. Then beta fourth number entry will be only allotment money received. So bank account debit to equity share allotment because 4,30,000 you already received. And last entry will be equity share first call account debit to equity share capital and bank account debit to first call. So easy, easy, easy. Yes. Very easy question now. Now you only tell me, are you going to recall all these entries by your own? इतना हार्ड सम एग्जाम में पूछते हैं क्या? अरे आदिश शाह इसमें हार्ड क्या है यार? एकदम सिंपल छे बेटा. क्यों चाहना? Nothing is difficult. Okay. It's very simple, Adish Shah. So application received, allotment of share, application money received, application money due. After that excess money के बाद क्या करेंगे हम लोग? Adjustment with the allotment. So adjustment with the allotment उसके बाद क्या करेंगे? Excess money refunded, first allotment money received, and last one is the first call due. एक 2-3 बार रिवाइज किया तो ऐसा बोलेगा, तो ऐसा बोलेगा ये क्वेश्चन. है क्या 7 नंबर में? बेटा 8 मार्क्स, बेटा 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए नंबरिंग के साथ. सो नंबरिंग्स बाजू में करके दिए. आई हैव गिवन यू ऑल टेक्निक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ इट्स योर टाइम टू रिवाइज इट. See beta, when I was in intermediate at that time, this question was very difficult for me. But now, as I am a faculty, now it's very easy for me. But if you are doing the practice properly, I have given you all small tips how to solve this question and logical one. The sequence is very logical one. So if you follow this sequence, you can pass, and you have to do the practice for 2 to 3 times. If you do the practice for 2 to 3 times, it will be very easy. Yes, beta. Final call, you can write it. Final call. सर सेकंड एंट्री एक्सप्लेन कर दीजिए. मोहम्मद रेहान जी. देखो बेटा, हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है 7,10,000 मिला, तो उसमें से 2 लाख रुपया कैपिटल में जाएगा, 80,000 रुपया रिफंड करेगा एंड 4,30,000 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू बैंक 80,000 एंड एडजस्ट जो करेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,30,000. बेटा बोलने का इट्स इजी, इट्स इजी, इजी छे. You made it easy, sir. Pritesh Sutar is saying, sir, this is very amazing question. Yes, beta. Sir, making this type of table is compulsory or we can do it directly, beta? No, beta. Ardhay, how can you do this directly without knowing the total column? Means बहुत ज़्यादा intelligence level लगेगा. So it is very difficult, beta. So working notes helps to solve these questions. You make it easy, sir. Yes, beta. Keshav Thakur, thank you. How much numbers this chapter consist in exam? 10 marks, beta. Rashika Khandelwal. 10 marks. So now ब्रेक का टाइम दे दूं, फिर हम लोग वापस आते हैं फोरफीचर के साथ. यस, 7 नंबर सर कल से लगातार बता रहे थे डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट. नाउ इट्स इजी बेटा. व्हाट इज योर today's homework? You have to solve this question minimum 2 to 3 times by using टिक-टिकी-जी technique. टिक-टिकी-जी technique and tell me it in the next इसमें कि कितना टाइम आपको लगा था. यस बेटा, कितना टाइम लगा नेक्स्ट इसमें बता देना कि मुझे. मैक्सिमम टाइम 8 to 10 minutes. मैक्सिमम टाइम 8 to 10 minutes. ठीक है. चलो, I know my students are very intelligent. Once I told you the simple concept, आपको ये समझ में आ ही जाता है. या अभी मैं नहीं बताएगा रे मोहम्मद रिजान, इतना तो आपको ये करना है. 4,30,000 एडजस्ट करना पड़ेगा ना. तेरे से मुझे 100 रुपया लेना है और तुझे मुझे 300 रुपया देना है, तो तुझे 100 रुपया एडजस्ट करके मैं 200 रुपया दूंगा ना बेटा. एडजस्टमेंट क्या इतना डिफिकल्ट है? क्यों ऐसा पढ़ाई के लिए क्यों सोच रहा है? थिंक इट इन लॉजिकल वे कि तेरा एक्सेस मनी मेरे पास ऑलरेडी है और मैं वापस तेरे से पैसा मांगूंगा तो चलेगा क्या? मैं सिर्फ डिफरेंस मांगेगा ना तेरे को. इसमें 10 बार क्या वही क्वेश्चन पूछते हो? सर एडजस्टमेंट मनी इसने भी पूछा सर, ये मैंने बता दिया, तब भी एक्सप्लेन किया, वापस सेम क्वेश्चन तू रिपीट पूछ रहा है मुझे.
सेम क्वेश्चन कैसे रिपीट करते हो आप लोग? अभी ये सिंपल सी चीज है, सपोज मुझे किसी को, मेरे चाय वाला है, वो चाय वाले के पास मेरा ऑलरेडी 10 रुपया है, मैंने और दो चाय पिए, तो मेरा 20 रुपया होता है, तो 10 रुपया उसके पास एक्सेस पड़ा होगा, तो 10 रुपये में ऊपर से दूंगा ना उसको, या वापस 20 रुपया दूंगा। सेम चीज है यार, एक्सेस मनी का। सेम चीज कैसे पूछते हो रे बार बार? थोड़ा सा तो सीए लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखो। स्पेसिफिक फॉर्मेट, यू हैव टू राइट इट इन द सेम वे। हो गया, इजी चैप्टर है, खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं, ये एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फोर फीचर इज नथिंग। फोर फीचर यस्टरडे ओनली वी सॉल्व, द सेम वे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द फोर फीचर। चलो, लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं लगाना है कुछ। चलिए, थैंक यू। हम लोग ब्रेक के बाद देखते हैं। मैं गुस्सा इसलिए होता हूँ कि सेम क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है। हम लोग लेवल क्यों नहीं बढ़ाते, हमारी थिंकिंग लेवल बढ़ाओ यार, सीए कोर्स कर रहे हो, कोई मामूली कोर्स नहीं है, थोड़ा सा तो हम लोग लेमैन से अलग सोच सकते हैं ना। भाई जो आम इंसान है वो कुछ सोचे, हमें थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। टेक अ ब्रेक मीनू जी।